Good morning, students. Welcome to your computer class, and we are on the same chapter, Animation in Flash, chapter 6. Okay, so move on to page number 40. Okay, so we had started our chapter, and I had already completed till convenience. Okay, now I'm going to start with the layers panel, the last paragraph of your page number 40. Move on to that. Alright, so the panel is displayed here. If you do not see the layers panel on your screen, click on view layers to select it. Okay, so this is the page that is in your book. Okay, so this is the layer panel. Okay, so let's see. To add a new layer, click on the button in the layers panel or choose insert layer. Okay, so here the option you can see it is insert layer. So हो सकता है आपको यहाँ पर इतनी ज़्यादा विजिबल ना हो बट यू हैव योर बुक्स यू कैन ओपन दैट अप एंड देन you can view this. Okay, so this is the insert layer. Okay, right here. So if you want to insert a new layer, then what you will click on, you will click on this insert layer. Okay, next is to move on to page number 41. Okay, so this is the page 41. Okay, so now to rename a layer, double click on its title in the layers panel. So if you want to rename the layers, then you have to double click on this. Okay, and type a new one, or you will type the new name and then you will press enter key. Okay, now to select a single click to select a layer, single click on its title. Okay, if you want to just select it, then just single click on it, then a small pencil will appear. So this in G जो blue वाला है, okay, this has been selected and a pencil has been appeared here. Okay, watch your books. Okay, now a small pencil will appear next to the title to indicate that the layer is, so what this pencil shows that this is editable. Okay, that is इसको हम चेंज कर सकते हैं, वेराई कर सकते हैं. To make the layer invisible, okay, so if you do not want to see it and you want to make it invisible, select the layer and then click on the view layer button. Okay, so you will select it and then you will click on the view layer button. Okay, so next is to lock the layer. Okay, so to lock the layer, ये तो आपकी बुक्स में साफ पे दिखा हुआ है, तो यहाँ पर to lock or unlock you will click on this जो center में है, that. Okay, so select the layer and click on the, first of all you will select the layer by single clicking on it, and then you will click on this middle one, that is lock or unlock. Okay, when a layer is locked, no, अगर lock है so no modification, आप उसमें कोई changes नहीं कर सकते. अगर unlock है तभी आप उसे modify कर सकते हैं. Okay, to outline a layer, now if you want to outline the layer, okay, select the layer and click on the colored box button. Okay, so now you will select the layer और जो colored box है that is at the end of this. Okay, एक colored box है उस पर click करेंगे. This will turn all images in the layer into colored coded outlines. So वो उसी colors में आ जाएंगे. Okay, now to remove a layer, if you want to remove a layer, click on the layers title from the layer and select the delete layer. So delete layer पर click करेंगे आप and it is right here. Okay, so just single click it and delete, press on the delete key. Now once the layer is deleted, अगर एक बार वो delete हो गया, then all the objects related to that will be deleted. Okay, next is property inspector. The property inspector is the panel where you can set or edit the properties of the stage or selected tool. तो जहाँ पर आप अपने सेट की चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, दैट इज़ द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर. Okay, now let's move on to the topic types of layers. That is, there are 3 types of layers which can be created in Flash. So Flash में 3 types के layers create किए जा सकते हैं. One is normal, second one is guide and guided. Okay, guide and guided, and third one is mask and masked. Okay, so first one is normal layer. It is the layer shown by default in Flash. मतलब by default यही होता है. अगर आप Flash खोलेंगे आपको कोई और चाहिए तो you will have to make them up, but by default उसमें normal layer ही होगा. Okay, you can draw and animate an object. Okay, जहाँ पे आप एनिमेट कर सकते हैं. नेक्स्ट गाइड एंड गाइडेड लेयर, एज द नेम सजेस्ट दिस लेयर गाइड्स द पार्ट टू द अदर लेयर्स. सो एक लेयर दूसरे लेयर का
path शो करेगा इसमें. Okay, you can draw in this layer any object of any shape and guide it to follow a certain path, as in the case of bouncing ball. So जैसे बॉल बाउंस करती है, तो फिर अगर वो यहाँ से बाउंस हो रही है, देन क्लिक एंड देन क्लिक, ओके, तो वो आगे आगे को मूव करती है. सो दिस इज़ द पाथ, ओके, दैट द बॉल हैज़ टू फॉलो. सिमिलरली in this guide and guided layer, one layer is interrelated to another layer. Okay, so एक layer दूसरी layer से related है और एक layer का path दूसरी layer follow कर रही है. You may create a ball in one layer and make it follow a bounce path in another layer. So for an instance, if I draw a ball right here, and I can draw in another layer that it has to follow and has to bounce uh, and move on to next. Okay, so this is guide and guided layer. Next is mask and masked layer. You may place any shape or symbol in a layer and select it as a mask layer by choosing the selection mask option. So selection mask option पर आप जब click करेंगे, the layer below the mask layer is the masked layer. So mask layer के नीचे ही masked layer है. Okay, it lets you define the visible or non-visible portion of the layer below the mask layer. So mask layer के नीचे ही masked layer आता है. Okay, which tells you which lets you define which is the visible and non-visible portion of the layer. So कौन सा visible है and कौन सा non-visible है. Okay, so these are the layers and these are the three kinds of layers. Okay, now let's move on to page number sorry, all right, let's move on to page number 42. Okay, so this is the 42 page number, that is tweened animation. So what is tweened animation? The meaning of tweening is in between. Okay, that is between. Tweening means to, okay, in twinning animation a series of images appears at a fixed interval of time. तो बहुत सारी images है but they will appear at a very fixed interval of time. Okay, like मैंने first image को 2 second, 3 second, 4 anytime. Okay, these images differ slightly from each other. हर image एक दूसरे से अलग होती है. So it appears as if some movement is being shown. तो ये कैसे appear होगी? As if movement हो रहा है. ओके, यू ओनली स्पेसिफाई द फर्स्ट एंड द लास्ट की फ्रेम. आप बस फर्स्ट और लास्ट को ही स्पेसिफाई करते हैं एंड फ्लैश ऑटोमेटिकली फिल्स द अदर फिल्स इन बिटवीन द टू की फ्रेम्स. ओके, सो फ्लैश ऑटोमेट आपने बस फर्स्ट एंड लास्ट की फ्रेम डिसाइड करना है एंड रेस्ट ऑफ द की फ्रेम्स विल बी डिसाइडेड बाय फ्लैश इटसेल्फ. और ये कैसे होगा? अगर आपको कोई बॉल है और उसका एनिमेशन शो करना है, लाइक ये फर्स्ट है, आपको ऐसे शो करना है कि वैसे बाउंस होकर ऐसे ऐसे करके जा रही है और आगे को उसके जो भी चेंजेस होंगे उसी को हम ट्विन्ड एनिमेशन कहेंगे. ओके, नेक्स्ट इज़ मेथड्स ऑफ एनिमेशन. तो अब एनिमेशन करने के कैसे कैसे मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़, सो देर आर 3 वेज. फर्स्ट वन इज़ motion tween. Okay, so motion tween. Second is shape tween and third is motion guide. Okay, so let's see first one, which is motion tween. This is one of the basic animation techniques. In motion tweening, you specify the initial and end position of the object. Motion tween refers to any object that travels from one point to another and involves no change in the shape or size of the object over a period of time. So what is motion tween? Motion tweening, you just set the initial, that is starting का and end position of the object. Okay, starting और end की position को decide करेंगे आप, that's it. Then motion tween refers to any object that travels from one point to another. मतलब ये क्या शो कर रहा है? मोशन का मतलब ही क्या है? मूवमेंट. ओके, सो व्हेन it shows that from one point to another point it changes no shape और size में उसमें कोई changes नहीं होता, but it moves from one place to another. Okay, however उसमें क्या क्या changes हो सकते हैं? Changes of color, texture means when you touch anything. Okay, so the smoothness or the roughness that the object has is called texture. Okay, और distance of the objects. तो ये सब चीज़ें वेराई कर सकती है. जनरली मोशन ट्विनिंग वर्क्स ऑन सिम्बल्स और ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स. तो ये सिम्बल्स में यूज़ करते हैं.
ओके लाइक अगर मैं कोई एक एस्ट्रिक्स जैसे एक स्टार का सिंबल है और मैं उसे बाउंस करके यहाँ पे लाना चाहती हूँ, तो फॉर दैट इट कुड बी यूज्ड. ओके नाउ सो द वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट मोशन ट्वीन एनिमेशन आर, क्या क्या स्टेप्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द ऑब्जेक्ट टू बी एनिमेटेड, ओपन अ. सो सबसे पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है जिस पर आप ये मोशन ट्वीन करेंगे. ओके सो जैसे इन्होंने ये बाउंस सा एक बॉल सा क्रिएट किया है. ओके सो उसके स्टेप्स क्या है. ओपन अ न्यू फ्लैश फाइल. ओके सो न्यू फ्लैश फाइल खोलेंगे आप एंड देन ड्रॉ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज. जो आपके पास स्टेज है, ये आपकी स्टेज है, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे. ओके एंड देन कन्वर्ट इट इनटू अ सिंबल बाय चूजिंग मॉडिफाई एंड देन यू विल, यहाँ पर आपकी बुक में काफ़ी विजिबल है, यहाँ पे मॉडिफाई है एंड देन यू विल कन्वर्ट इनटू अ सिंबल, जो कि सेकेंड नंबर पे है, कन्वर्ट टू सिंबल. ओके जिसका शॉर्टकट की भी है राइट, दैट इज F8 इज द शॉर्टकट की. ओके शॉर्टकट की. नाउ अ कन्वर्ट टू सिंबल बॉक्स अपेयर्स. फिर उसके बाद ये कन्वर्जन वाला बॉक्स अपेयर होता है. ओके एंड इन दिस बॉक्स यू विल टाइप द नेम and then and then movie. Okay this makes creating animating movie very easy. Okay so click OK to convert. Now you will click on this OK button. Okay उसका नाम आएगा and whatever option, then click on the OK button. Okay now this इसकी वजह से it becomes very easy. Okay now second step में आप क्या करेंगे. Now create the first and final stages of animation. So बस क्योंकि motion tween का मतलब क्या है, you have the first and you have the last, दैट इज़ आपको सिर्फ दो ही इमेजेस चाहिए उसमें. ओके नाउ क्रिएट द फर्स्ट एंड द लास्ट फाइनल स्टेजेस ऑफ एनिमेशन. तो ये फर्स्ट स्टेज क्रिएट हो चुकी है. नाउ फाइनल स्टेज हम क्रिएट करेंगे. द टाइमलाइन कंटेन्स अ की फ्रेम ऑन फ्रेम 1. सो फ्रेम 1 में आपके पास की फ्रेम है. ओके टू क्रिएट योर एनिमेशन यू नीड टू इंसर्ट अ सेकेंड की फ्रेम फर्दर अलोंग द टाइमलाइन. तो उसमें आपके पास टाइमलाइन में ऑलरेडी एक की फ्रेम है. नाउ यू हैव टू क्रिएट अनदर की फ्रेम. ओके नाउ click on frame 20 of the timeline and select insert timeline keyframe options. Okay so you will select the in timeline. Okay you will go in the timeline and you will click on and you will click on the frame 20. so यहाँ पर ये frame है that is 20. okay आप इस पर click करेंगे. last time I have explained you कि जो ये grey color की lines है where every fifth is dark. okay so आप उसमें 20 को select करेंगे. now select insert, then you will select insert timeline keyframe options. okay and then you will click on insert timeline and keyframe options. okay so now move on to page number 43. okay so this is your page number 43. make sure you have the keyframe at frame 20 selected. so keyframe 20 पर आपने select किया है. now move your object to another location on the stage. now you will move to another location. पहले उस location पे था, now you will move it on to the another location. okay so next select any frame between 2 to 19. now you will select any frame between 2 to 19 and select motion from the tween pop-up menu in the property inspector. okay so from the property inspector you will now select the tween pop-up. okay now so if you select the select control. okay यहाँ पे इस वाली image में you have selected the control. okay and then you will select the test movie from there. then you should see your ball moving gradually from the first position to the second position. okay so first position से वो second position में move करती हुई नज़र आएगी. you can vary the time that ball takes to move by clicking on the keyframe at the frame. okay so आप उस पर क्लिक करके उसका टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं. now to play the movie select control play option. so फिर से control में ही जाएंगे and you will click on the play option which is on the first one. okay so that's all for this class. okay this was your classwork, that is chapter explanation. next shape tween and motion guide we will do in next class. okay so this was your classwork for today. what you have to do for your homework is this page number, move on to page number 47.
Okay, and this F question you have to do for your homework. Okay, so that's all. Thank you and have a nice day.